Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. There is some mischief going on today's show. Just be vigilant. And in the beginning itself, there is some disturbance. We are trying to sort it out. I only hope it comes out well. We are just 2 minutes late because of this technical snag. And just trying to get hold of the Facebook too. A minute. And as usual, we have the modern Ghalib of public health, Dr. AMITAV Banerjee, who has joined from Pune. He's a renowned epidemiologist and professor community medicine. Facebook check చేయమని Facebook రావడం మరి చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇంకో సెకండ్ లైన్లో లైవ్ పెట్టినా సో little bit of mischief is being played, but fine, we are ready, we are equal to your task. Still it will go live, and as usual, because as and when AMITAV Banerjee and myself we come on Dr. TSPR channels, invariably some dirty tricks will be played, and it is happening again. For that reason, just be vigilant, and the Facebook will start, because we have just shifted to another one because they have made us to go dry on the original the link, but the same link should be holding good. I only hope it holds good also. Just try to check that link also. And most importantly, I like to show some thing for today's because as and when Dr. AMITAV Banerjee either bowls pace or spin, Dr. TSPR channels will catch it. And there is another prime catch, because Mr. Banerjee is more interested in gaming everything. So this is another catch Dr. TSPR channels caught when Dr. AMITAV Banerjee bowled. Even before he started to bowl, they were crying hoarse that they are out. Here it is. But they have taken all the past into consideration. And when we said whether this COVID-19 or Corona, over the 2 years, is it real or Maya? Is it farce or real? If you want, for Englishmen, they were asking me, Maya, you learn, I said, this is a beautiful language. So you should learn. And that's how it is. So I'm trying to relate it. Union Home Secretary, Mr. Bhalla, he is not that Bhalla of what is that movie, Rajamouli's Bahubali, but he is Union Home Secretary, trying to become like that. But anyhow, it is the public will, because science, truth will prevail once the freedom is hijacked. विज्ञान हो वैज्ञान हो, साथ में सच्चाई, उसकी जीत होगी जब आप प्रजा के, नागरिक के हक को कुचलने की कोशिश जब भी किया, किसी ने भी किया, ये दुनियादारी है. तो इसी का आज ने हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पे. डॉक्टर TSPR चैनल्स ने कैच किया और डॉक्टर AMITAV Banerjee साहब ने बोल किया था. ये यूनियन होम सेक्रेटरी राइट्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स, advises them to consider appropriately discontinuing issue of guidelines under Disaster Management Act for COVID. Check the link. Containment measures. Advisories on COVID containment measures, including use of face masks, will continue. फिर देखिए, फिर और एक तमाशा देखिए. This is what it is, and we will go through the order. एक सज्जन ने, good friend ने has sent it. Ajay Balla, IAS, Home Secretary, Government of India, 22nd March 2022. क्योंकि हम ये शो को काफ़ी पहले अनाउंस करके रखा था, because of so many urgent works Mr. Dr. AMITAV Banerjee was attending to. So the flyer was there, link was there, everything was there. As you are aware, since the 24th March 2020, on the direction of the National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs has been issuing orders and guidelines under Disaster Management Act, DM Act 2005, for the containment of COVID-19 in the country. So ये भी है. और साथ में हम एपिडेमियोलॉजी एक्ट भी बताते हो, आर्केइक, उसको लेके डराते थे लोग. तो ही सेज
this act will not be in place. बट साथ ही साथ में हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एडवाइजरीज ऑन कोविड कंटेनमेंट मेजर्स इंक्लूडिंग ऑन द यूज ऑफ फेस मास्क एंड हैंड हाइजीन विल कंटिन्यू टू गाइड द ओवरऑल नेशनल रिस्पांस टू द पैंडेमिक। इसीलिए आज का शो इस बल्ला साहब को, प्रधानमंत्री जी को और सारे मुख्यमंत्रियों को, राजनीतिक दल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ड्रग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी लोगों के लिए आज आधार के साथ हम बांडा फोड़ने वाले। और एक बार, हर बार अमिताभ बनर्जी साहब ने और हमारे अनेक साथी, कुशवाहा जी, इसके पहले तो पूरा का पूरा जो अंधेरा है, अंधेरा को फाश कर दिया था, तो आधार के साथ बता रहे हैं। आज भी ये जो अगेन हम बोलते, एक तरफ हम निकाल रहे हैं, एक तरफ फिर एक बड़ी साजिश रचाया अजय बल्ला ने, इसी को आज हम छेद करेंगे। क्या ये सच है या माया है COVID-19? और sir, I'll make you a presenter. There are another videos, we will do that after Amitabh Banerjee sab presents it. एक पैर इधर, एक पैर उधर। आपके बॉलिंग से काफी डर रहे हैं लोग। That's all. Must be coincidence. काफी लोग people भी अवेयर हैं, probably अभी बाकी जगह भी बहुत पहले ही बंद कर दिया था restrictions. They had lifted a lot of restrictions in all over the world. So it should not be. I think it is visible now. Yes, sir. पूरा Yeah. Wonderful. Yeah, पूरा this is even this meaning of Maya actually is not easy to understand. It is in Hindu mythology, and it's an Indian word. Was the pandemic over the past real or Maya? Maya has got 9 meanings. So it has got subtle meanings depending on the context it is used. And one of the meaning is that it is magic, whether it is virtual, I mean not real. Then other meaning is that Maya means a dream. It is as if Brahma is dreaming, the whole world is a dream, not real. Another meaning is Maya means love, attachment. Then other meaning can be greed. So it has got a meaning, a spectrum of meaning. Sometimes the way it is used, it can be used for good purposes, for compassion, for love. It can be used for bad purpose, to deceive, as a magic. So, and these different meanings were told to me by our great friend. She comes on this channel also, Dr. Maya Valecha. Her name is also Maya, so she knows all the meanings of Maya. So she only narrated some mythological facts, which I will be presenting. And I would just say that in this pandemic for the past 2 years, Maya in all its form, in all its different meanings, have played an important role. So this is the meaning of Maya. The definition which we start with is that Maya is something that looks different than it actually is. And then in the mythology, Mayavi Shakti was known only to the demons. Initially, it was only known to the demons. And in this, whether using this definition, is the pandemic real or is it a deception or is it a imagination? So we will analyze with data. I mean, we will not in our analysis and in our presentation. We will not use Maya. We will use as science. We have to use facts, but we have to see the public perception may be Maya. What is conveyed to by distortion of data, even data, if it is not used properly. You have seen the mathematical models of Neil Ferguson, of other people. Now also they had a mathematical model predicting there will be a fourth wave in 22nd May. They have given the date also. So they have made a model which is deceptive, which is again Maya. They also had predicted a pediatric third wave. They would where the pediatric third wave? Where is the third wave for that matter? So these are all Maya by mathematical models.
So what we will use it in a correct, we will try to find out what is the reality. So this is one of the mythological figure in Mahabharata. Ghatotkacha was the name of this person with special powers. He was given the power of magic, and he became lethal with the combination of the demonic forces of Maya, that is magic and deceit, and also the for a purpose, for a good purpose, for defeating the enemy, that is the Kauravas. He fought for the Pandavas. The Krishna gave him special powers, and his power grew tremendously in the night. You see, this last sentence is important. I think in this pandemic also the virus became more lethal in the night. That's why they had night curfew. Because if you see, most of the time they impose night curfew thinking probably the power becomes low. Again, it is a Maya. Actually, virus is same whether it is day or night. So it shows that it is also the whatever measures were there, it was more of Maya than on science. So he was given a boon by Lord Krishna, and nobody could match him in magic and sorcery. We have got the modern people who are practicing Maya by the mathematical models. So in those days, it was the supernatural powers. He was summoned to take and magical powers. He wreaked havoc in the enemy camp. Okay, second. And what he could do with the Maya, Sir, he sir. could create Maya. Sir, 1 second. As feared, I think there is some problem with the live. 1 second, sir. Let me just rectify this. Yeah. ये बदमाशी चल रहा है. One second, sorry sir, क्योंकि it's such an important show. No problem. यहाँ पर लाइव बता रहा है. एक सेकंड डॉक्टर साहब, just trying to sort out. Yeah. Link is same. It is playing here, but it is not being ghost. Everything is okay. They say they have hacked it. Huh? Hello? People check ji. Huh? ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు దాంట్లో? Doctor Saab, can you Yeah. go to the first page, your first slide?
This is the one. Yeah, you start from here, Doctor. First slide. We'll just see how it is coming up. This is the discussion on the pandemic, and as I said, the Maya. Maya has got many meanings. It has got 9 meanings in Hindu mythology. Maya can be used for good Is it okay? purposes. Maya can be used for bad purposes. Maya means right from deception, magic, or it's a virtual reality or a dream. Maya means the attachment. Maya means a greed also. So it depends on what way it is used. So as I said, Dr. Maya Valecha only told me the 9 meanings. There are 9 meanings. So I was just trying to look at the 9 meanings. It is such sometimes it lost in translation. So it depends on the context which it is used. So for all purposes to start with, because as we go, we will see that starting with one purpose, Maya became another purpose. Maya became attachment. Maya became greed, and Maya became the deviation from the truth because of deception, or sometimes because of illusion. Maya also means an illusion or imagination. So all the meanings are can be applied in this pandemic. So here the definition of Maya is something that looks different from what it actually is. This is one of the simple definition. And Mayavi Shakti, that is the supernatural force, was known only to the demons. That is to deceive, to cause magic, sorcery. Using this definition, the pandemic, is it different than what it appears to be? What is the truth of this pandemic? So this would be a purpose. And as we see, this is one of the characters, mythological characters in Mahabharata, Ghatotkacha. Was given the special powers by the gods. He became the master of magic, and he became lethal to the enemy by these powers of Maya or magic or deception. And this, of course, he used for good purpose by defeating the enemy who were the Kauravas, who had taken away the kingdom from the Pandavas. So, and the last sentence says that his power grew tremendously in the night. I don't know whether the COVID control measures also they had night curfew because they thought the power of virus will be more in the night, whereas actually the virus was same day or night. So this was again a myth that the supernatural powers or superstition thinking that virus will become more lethal, so night curfew and other things, we don't know. There was no science in it. So this Ghatotkacha was given a boon by Lord Krishna that no one could match him in magic. And he used it, and even the great warriors of Kaurav like Duryodhana, the enemy camp, could not stand up to him against his magic and Maya. And what was his other modus operandi? That he could create Mayavi clothes. Mayavi clothes means like Maya, the clothes were not real. They were fake. Jewelry also. He would sell them to the opposite camp and collect the money. Next day, these clothes and jewelry will disappear. Just like we had the. So, does it ring a bell? Like we have the vaccines and we find the protection after 3 months, 4 months, efficacy is going down. That's why we require first booster, second booster, third booster. Some of the countries are giving 4 doses like Israel. What is happening? The we were promised that it will be 90% efficacious. And if last time I saw you data from many countries, from Japan, from South Korea, from Singapore, from Malaysia, from Sri Lanka, all this data available in the public domain. If you just see the rollout of the vaccine, if you find even in the UK and USA, the cases are much higher, including deaths are much higher after the vaccine rollout. So is it the Maya? Is the vaccine also a Maya? Like this Mayavi clothes that the manufacturers have collected all the profits and it is the vaccine the efficacy is going down? So these are some of the questions. These are the questions which the scientific community has to investigate. And let us see what is the real fact. I mean, we have created such a investment, such curtailment of individual rights, of movements, such loss of autonomy, such loss of jobs, lockdown, pushed so many below the poverty line, as if Maya, again the magic of the pandemic, whether now
let us compare with the hard data, whether it warranted when the pandemic, was it really that serious? Or it was a maya or imagination or illusion that it is larger than life. So the infection fatality rate as on today or even after few months in the pandemic, it was that out of how many people affected, only 0.3% succumb to the virus. Only 0.3%. 99.7, that is including the Western countries. Western countries, the average age of death was 80 years. We don't have a life expectancy of 80 years in our poor countries. So average age and infection fatality rate in younger population like India was 0.1%. I have given the references. It can be hard data that in India, across all age groups, 99.99% people, 99.9 survive. That is including elderly and children. But if you take young people below 18 years, 99.9973 survive. The death in children is in one in two in 1 million. So, or 1 in 1 million in Indian countries. This 2 in 1 million is in the Western countries where the young people are also obese. Obesity is a risk factor. It is lowest among all diseases, communicable and non-communicable disease. The infection fatality rate from COVID-19 infection is lower than fatality rate from typhoid, tuberculosis, malaria, dengue, scrub typhus. All these diseases are endemic in our countries. So we don't close all the schools. We don't give mass vaccination. Japanese encephalitis we have got in our country. Vaccine is there. Typhoid vaccine is there. We don't do it. Mass mandatory vaccine, child vaccine, everyone. Whereas some of the vaccines are much effective. But why we are giving this Maya or why this Mayavi or magic spell around a vaccine, which is a leaky vaccine? You see, the vaccine is also not preventing transmission. That's why they tell you to wear mask after vaccine, social distancing. That means what is the purpose of the vaccine? And after some months, the vaccine, why you have to take a booster? That means vaccine is not working. So lowest among known diseases and most deaths in hospitals were due to the mismanagement. Initial first wave, there was panic in Italy, panic in USA. People were put wrongly on ventilators and many people died on ventilators. Then later they realized it is not a problem, it is a problem of blood clotting. So it required a different mode of treatment. Then remdesivir was black में बिका हमारे country में, black में बिका. Later it was found that remdesivir has got no effect. Sometimes it may, particularly in elderly people, it may damage the kidneys, damage the liver. And there is again re-emerging evidence of efficacy of ivermectin, which was banned by the mainstream authorities like FDA or even CDC. It was not available that way. In our country, it was available. Particularly in Uttar Pradesh, it was used and the rates came down. But ivermectin, people were not allowed to prescribe ivermectin in Australia, in America, in Canada. And now the evidence is more on some efficacy may be there. As I said, keep saying also that when the survival itself is 99.99, it will be difficult to find out whether remdesivir is working or ivermectin is working. But ivermectin is safe because it has been in use for 50 years. Ivermectin is cheap. So these are the factors which should be kept in mind. And it has got some immune modulation. Then what are the because of this maya of the magic spell around a disease which is such low mortality, intervention caused more harm. Even today the letter has come from the home secretary that COVID, all the epidemic disaster measures will be lifted except for mask. Whether, where is the evidence? Mask, there have been efficacy. Two major randomized studies, the Danish mask study and Bangladesh mask study, did not find much impact. The Danish mask study did not find any impact. Bangladesh mask study did not find cloth mask, which is used by the general public. Cloth mask, like they are telling that school children also, they can only use cloth mask. You can't use a surgical mask because surgical mask also has to be changed every 6 hours. And in Indian conditions, it gets wet in 2 hours. The sweat, summer is coming. So mask, the Bangladesh study showed no effect of cloth mask over no mask and only 11% reduction by surgical mask properly used.
Nobody can use it properly. Not even doctors can use it properly outside the operation theater, because you touch, you eat, and mask get contaminated. It has to be thrown away. And in Indian conditions, it may get wet. It may cause fungal infection. There was a high rate of mucormycosis last summer. Can it be due to mask? That has to be studied. So there are more infections rather than it prevents. And everybody knows that virus is very small. The mask cannot filter the virus, and other infections get collected here. Whole day, whole child will get dirty, the adults will get dirty. So important can be other side effects. We have to see. Blindly we are doing something which has got no scientific basis. Then sanitizers can cause skin disease, dermatitis, absorption through the skin, the chemicals. Then social distancing. Again, in the today's letter by Home Secretary, they said social distancing and masking. Social distancing can also Here, harm. sir, here I want to mention our Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, and likewise Shiv Sena MP and many chief ministers, they don't wear mask, including police officials. But they were imposing even during the pandemic time, last 2 years. And how is that it doesn't affect them? And there is no physical distance or social distance in between them. You have seen lakhs of people attending rallies. In the cinema theaters, there is no physical distance. See, now big movie, another movie is being released in spite of the examination schedule. A shame on the censor board. Either Hindi or Telugu. Telugu big time movie, Triple R. And you see people are just converging, there is no social distance, but Social on the paper they are asking you to wear mask and then physical distance and then sanitation by sanitizers, killing all that commensal organisms in your hand. Don't you think this is they absolutely nonsense? they want to keep the Maya alive. They want to keep the mystery alive. That is the non-reality. They want to keep you in Maya of fear, of magic, so that you see, they have done scientifically 6 feet and 60 feet doesn't make any difference. Even if you are 60 feet away, very small aerosols they travel. And Omicron, the newer variants, they travel through the mass, they travel to long distances. So, in fact, if you are doing too much of social distancing, your immune system is not stimulated. Your other lot of stimulation required by other microbes which are useful. Even the Omicron is useful nowadays, they say. It is a very mild variant, it gives you natural immunity. So if you are keeping them away, what is happening in South Korea? What happened in Kerala? Because their initial quarantine was 2 digits. South Africa, everybody said very good model, very good model. Now see, even after 3 doses, they are having highest number of deaths they ever had. Why? Because they had very much social distancing, they had quarantine, their natural immunity has not developed. Vaccine is giving very kacha, very leaky immunity, even after 3 doses. India, opposite happened. They put lockdown. We are living in crowded condition in slum tenements. Even middle class houses are crowded. We developed very strong immunity, and that is the reason why we are having no cases and deaths as on today. Negligible cases where the world is just here, and the states in India which did very strong, like Kerala, they had the longer tail. So this the data itself is speaking. And whatever you may say that you have given 100 crore, 130 crore, 180 crore doses, and we have controlled and the collar tubes, this does not, it is the natural infection which already got, which is, and you see in Delhi, they did the survey, more than 80% below 18 years, young people had the antibodies, more than 80% in September had in other parts of the country also they found very high rate. That is before the vaccine was rolled out. So before the vaccination, and now the Israeli studies are there which says that 13 to 27 times stronger immunity from natural infection recovery than from the vaccine. So all these things are anti-science actually. And lockdowns was the most brutal, insensitive, and draconian. Vitamin D deficiency due to lockdown because the sunshine is required. Ventilation is poor in crowded homes due to lockdown. It spread the natural. That's why we have got so large herd immunity. Unemployment, poverty. People lost their fractured society, suicides have increased, child abuse has increased, violence, alcohol and drug addiction has increased. Increased obesity because of sedentary life, work from home. They became more vulnerable. Every person gained 2 to 3 to 5 to 10 kgs weight, some people have gained. And vaccines.
vaccines, we have rolled out a vaccine without a poor monitoring of adverse events following immunization. There are even anecdotal episodes of even child death. The child should not die. There is no death of a recorded healthy child from COVID. Why should a child die of the vaccine? Then how do you work out the risk benefit? You cannot work out the risk benefit if they are not giving the data of child death. They should have got 2 years data on child mortality and morbidity from COVID in healthy child. Then only you can calculate. As I said, data in UK shows that in 1 million infection, only 2 child died, and of those 2 child also had comorbidity. So healthy child, hardly any report of a healthy child dying. Not only that, Dr. And Saab, then what does these vaccines contain? We have seen the cough serum, newborn cough serum is being used in Covaxin, chimpanzee cells likewise in Covishield, and other aborted fetal cells in the other vaccines. And why they are not, whether so they these can be justified if the mortality had been 5%, 10%, 20%. When the mortality is a 0.1%, and that too in the people with comorbidities, people, most of the cases who died with COVID rather than due to COVID, they die of 3 to 4 other comorbidities. So the vaccine can only be justified whether it is calf cell or non, whatever ingredients, or the side effect is also being reported, which are not been properly monitored. Only if the disease mortality, that's why this figure of disease mortality is very important. What या is the disease जो mortality लोग for लोग you जिस comparative? कोरोना से जो लोग बढ़ रहे हैं वो खाली 0.001% भी नहीं है, और बच्चों में तो असल ही नहीं है. तो ऐसे समय में हमारे गांव का बछड़ा इस तरह का लेना क्यों? मैं ये क्यों गांव का बछड़े की बात कर रहा हूँ? देश भर में गाय के बारे में इतना हंगामा चल रहा, और एक मत के बारे में हंगामा चल रहा, जब ऐसे ही गवर्नमेंट इनको कैसे ही प्रमोट कर सकती? और वो भी करना, जो कोरोना में 99.9% तो रिकवर अपने आप बिना चिकित्सा के वो लोग वो वापस आ जाते हो, स्वस्थ हो जाते. तो ऐसे बीमारी में ये सब क्यों? हमारे सांप्रदाय के खिलाफ क्यों? यस सर. That's why the question is, this pandemic is a Maya. It's not an actual pandemic. A actual original definition of pandemic has been distorted by WHO almost after swine flu. Before swine flu, the definition was that a pandemic is a disease which should kill healthy people, young people. But now WHO changed it, that even for mild cases which can spread across borders is a pandemic. So everything, anything spreads, elderly people are affected, and if you label it a pandemic, it is a wrong definition. Young people, healthy people should die without any other comorbidities. So that is a pandemic. We had a pandemic of plague, we had pandemic of cholera. Those were the pandemics where the death was 10%, 20%, 30%, even 40% in cholera before the oral rehydration therapy was discovered. Simple therapy was discovered, which could save so many lives. तो महामारी जब कहा जाता, महामारी में लोग 10% या 20% या कलरा में 40% लोग जब बन जाते उसको हम, और वो भी कैसे स्वस्थ लोग और बच्चे लोग, युवकों और स्वस्थ लोग, जब उनकी मौत होती है उसको महामारी कहा जाता है. और कलरा में भी सिंपल ओरल रिहाइड्रेशन जो लेने के बाद वो सुधर गए. लेकिन ये कहाँ की वैक्सीन, टीका क्यों, और ये मास्क क्यों, और ये हाथ वगैरह धोना क्यों, और अंतर क्यों लोगों के बीच में? सिनेमा में कोई डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, रैली, इलेक्शन रैलीज में ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई भी लोग आ रहे हैं, आजकल देख रहे हैं आप, हर एक विजिट कर रहा है, उनके लिए कोई फिजिकल डिस्टेंस, मास्क की ज़रूरत नहीं रहती, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं थी. यस सर, प्लीज़. सबसे बड़ा माया इज द RT-PCR टेस्ट, बिगेस्ट माया. अभी एक हफ्ते पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, अच्छा यूनिवर्सिटी है, उसने रिसर्च करके बताया कि दी RT-PCR जो फ्लॉड है, इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम या इन्फ्लुएंजा और कोविड को सबको डिटेक्ट किया उसने RT-PCR. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 साल से जितने कोविड केसेस हमने काउंट किए, इसमें सर्दी जुकाम भी काउंट हो गए और फ्लू भी काउंट हो गए. सब कुछ माया, तो सोच सकते हैं बड़ी माया. तो ये तो माया है ना. और ये अर्लियर हम क्या सोचते थे, RT-PCR फॉल पॉजिटिव फॉल नेगेटिव देता, वो तो ठीक है, वो तो अभी भी देता है. उसके अलावा वो कॉमन कोल्ड को भी ले लेता है, फ्लू को भी ले लेता है. एंड विद दिस फाइंडिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन,
may also have been clubbed at COVID-19 cases due to non-specific RT-PCR. और इस ऐसे फाइंडिंग को मेन स्ट्रीम साइंटिफिक प्लेटफॉर्म में कोई डिस्कस नहीं करता, मेन जर्नल में डिस्कस करता है, न्यूज़पेपर में एक कोने में आता है। और ये जो डॉक्टर साहब है प्रोफेसर बेलॉक्स, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के जीनोमिक सर्वेलेंस के अच्छे बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट है। तो इन्होंने कहा है और एक लाइन हमने एक न्यूज आइटम में है, जबकि इससे कितना ये हुआ होगा, कितना इन्फ्लेट हो गए होंगे फिगर। और आपने देखा होगा कितने बच्चे मरे हमारे, आज तक कोई डेटा दे रहा है हमारे इंडियन डेटा? तभी तो हम जस्टिफाई कर सकते कि बच्चों को वैक्सीन दो। अभी आपने 18 ईयर्स तक कर दिया, 15 to 18 ईयर्स, अब 12 to 14 ईयर्स कर दिया, तो अभी उनका डेटा होना चाहिए ना पहले कि कितने बच्चे 2 साल में उनका देहांत हुआ कोविड से। और अभी तो रिपोर्ट आ रहे हैं वैक्सीन से कुछ इक्के दुक्के बच्चों का ये देहांत हो रहा, जो कि बहुत बड़ा। और यही नहीं डॉक्टर साहब, हम इसी शो से खुलासा किया ना एनतागी का चेयरमैन डॉक्टर अरोरा, जब उन्होंने थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से 17 के बीच में बच्चे सेकेंड वेव में मर गए, इसीलिए प्रधानमंत्री 25 दिसंबर क्रिसमस को आके ऐलान किया बूस्टर और बच्चों की टीका है। फिर आज तक हम चैलेंज किए आधार के साथ, उन्हीं के टीम में आज तक उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है, विचारणा नहीं है। क्यों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी क्यों आप साइलेंट हो गए? और ये RT-PCR देखिए बोगस बोल के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने बता रहा, आप क्यों इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे? ये सब डर के आप बल्ला के थ्रू आप ये कल का लेटर भेजा है क्या? लेकिन उसमें भी फिर मास्क और वैक्सीन की और सैनिटाइजर की बात करते हैं। आप आइए, चर्चा करेंगे हम, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होता, असेंबली में चर्चा नहीं होता, कहीं पब्लिक में चर्चा नहीं करते आप। मनमानी हो गया ये राजनीतिक दल और ये सरकार, केंद्र और राज्य सरकार का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो नींद में है वो, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना डरा के धमका के हम कर रहा, उनको कैसी सजा देनी चाहिए आप ही सोचिए। यस सर प्लीज। अभी हमने जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ब्रैकेट में हमने रेफरेंस दिया है, साइंटिफिक रेफरेंस दिया है, पीयर रिव्यूड है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के हैं, और ये एंड में ये कोई भी चेक कर सकता है। तो इसको लेके अभी फॉलो द साइंस कहते हैं, एक भी साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा है इसमें, ये बड़ी दुख की बात है। और अगर ऐसे डॉक्टर अरोरा ने स्टेटमेंट दे दिया, उसको कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कहता। अगर हम क्वेश्चन करेंगे उनके स्टेटमेंट को, हमारा यूट्यूब बैन कर दिया जाता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी कर रहे हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी की बात नहीं है, हमको हेजिटेंसी होगा जब आप डेटा नहीं बताएंगे हमको। जब हमको डेटा नहीं बताएंगे तो किसी को भी हेजिटेंसी होगा। हमारे को जब देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा का डेथ नहीं हो रहा है, और बच्चे लॉकडाउन किया, हमने स्कूल बंद किया, उसके बाद भी 80% बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी आया सितंबर में। तो इसका मतलब कितने करोड़ों बच्चे को हो गया, और करोड़ों बच्चों को अगर इतना लीथल होता तो कुछ तो बच्चों एडमिट होते हैं, वेंटिलेटर में होते, कुछ बच्चे ICU में होते, कुछ नहीं हुआ। सेकेंड वेव में भी इतने ज़्यादा बच्चे नहीं आए, और थर्ड वेव जिसको कि हम पीडियाट्रिक वेव के लिए कितना माया बनाया था, एक भी बच्चा थर्ड वेव में, सब खाली थे पीडियाट्रिक ICUs। हर एक हॉस्पिटल खाली था ना साहब, हर कोई, इवन इंक्लूडिंग हम एम्स के कुशवाहा साहब, कोई भी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं है। यहाँ पर IIT कानपुर, IIT मुंबई, ये लोग हंगामा कर रहे, प्रधानमंत्री हंगामा, मुख्यमंत्री हंगामा, ICMR हंगामा, WHO बड़ा हंगामा, लेकिन हॉस्पिटल खाली है। लोग नहीं डर रहे, अब लोग सच जान चुके हैं। फिर इसके बाद में भी देखिए RT-PCR इतनी बड़ी खुलासा होने के बाद कैसे ये लोग शर्म से ये नहीं होते साहब? क्यों ये लोग बाहर नहीं आते अभी तक? क्या सोचते हैं आप? ये फोर्थ वेव कैसे कह रहे हैं? थर्ड वेव किधर आया? अगर अस्पताल खाली है, तो थर्ड वेव नहीं आया, तो इनको गिनती भी नहीं आता। इसका मतलब थर्ड वेव आप कैसे बोल रहे हैं? अगर खाली RT-PCR को थर्ड वेव कैसे कर रहे हैं, जबकि ये सर्दी जुकाम और फ्लू सीजन भी तो आता है ना बीच में, विंटर में। उसको आप अगर कोविड में काउंट किया होगा तो उसको थर्ड वेव तो माया हो गया ना, रियलिटी नहीं है, मैजिक है, गलत है, डिसेप्शन है। और जब हॉस्पिटल्स खाली पड़े थे, पीडियाट्रिक बेड भी खाली पड़े थे, एडल्ट बेड भी, थर्ड वेव तो आया ही नहीं, तो फोर्थ वेव का आप कैसे नाम ले रहे हैं? और एक बात डॉक्टर साहब, क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ के गालिब साहब है, ये वेव में ये उम्र को इफेक्ट होता, ये वेव में ये उम्र, और ये स्ट्रेन इस तरह होता, इस तरह जानकारी रहेगा क्या सब? ये पहले वायरस बताएगा हमको ये सब? ये इन्फेक्शन तो सब जगह इकट्ठे फैल गया है। और नहीं, इनका जो लॉजिक क्या था
इनका लॉजिक था कि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं दिया इसलिए वो वल्नरेबल है। अब ये उसको ओवरलुक करते हैं कि बच्चे को वैक्सीन देने के पहले ही उनको इन्फेक्शन हो गया है, हर्ड इम्यूनिटी उनको पहले ही आ गया है, उनका ऐसे भी इनेट इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है, एस रिसेप्टर नहीं होता, थाइमस ग्लैंड होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता वो। तो उनका ये था कि सबको वैक्सीन लगाना है, अभी बड़े को लगाया, अभी छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक लगाया क्योंकि वो वल्नरेबल है। वो एक माया कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, माया का कई मीनिंग होता है कि पेरेंट्स का जो अफेक्शन फॉर द चिल्ड्रन माया है, उस माया को आप यूज कर रहे हो। जो अच्छा माया है कि भाई ये देखो पेरेंट को डरा रहे हो, स्कूल नहीं भेजो, इसीलिए स्कूल बंद रखो, तो वो वैक्सीन का एक वो डर पैदा कर रहा है। और डेटा में मांगना चाहिए कि 80% बच्चों को जब ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया तो उनको तो सिम्टम्स भी नहीं आए, इसका मतलब बच्चों में तो माइल्ड है वो केसेस, नेग्लिजिबल है। और ये भी नहीं साहब, डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर अरोरा को या एन त्यागी और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डीसीजीए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है क्या सर? लोग स्कूल गए तो उनको इन्फेक्शन आता, बाहर कहीं काम करने के लिए गए तो इन्फेक्शन आता, लेकिन सिनेमा जाओ कुछ नहीं होता, लाखों के साथ रैली में जाओ कुछ नहीं होता, आप घूम के फिर के आओ कुछ नहीं होता। ये कैसी, ये बड़ी माया है, ये समझ में नहीं आता ये। तो इसका मतलब है कि घर में भी क्राउडेड होता है, हमारे हाँ। इंडियन घर में कहाँ बच्चे साथ ही रहते हैं, क्राउडिंग होता है, काम करने वाले आते हैं, ये आते हैं, एक कमरे में 4 लोग सोते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो काय का सोशल डिस्टेंसिंग, काय का मास्किंग, घर में कोई मास्क पहन के घूमेगा क्या? और गंदा होगा, मास्क से तो और इन्फेक्शन फैलता है। दूसरी चीजें भी तो है ना, खाली कोविड थोड़ी है, अभी हम बताएंगे दूसरे डिजीजेस भी है हमारे इंडिया में जो कि ज्यादा लीथल है हमारे पास। राइट। अच्छा, प्रोफाइल ऑफ हॉस्पिटल डेथ्स, ये भी देखिए, एडल्ट्स में भी जो ऐसे, इसका भी हमने रेफरेंस दिया है। 94% जो डेथ्स कोविड में रिकॉर्ड हुए वर्ल्ड वाइड, दे हैड 2 to 4 दूसरे बीमारियां थे, कोमोबिडिटीज। ओनली 6% डेथ्स आर प्योरली ड्यू टू कोविड। तो उससे आप बता सकते हैं कि कितना ज्यादा आपका ये भी, इससे पैंडेमिक का डर बह जाता है कि आप, मोस्ट डेथ्स वर अमंग द एल्डरली। एल्डरली में हम जितने सालों से मेडिकल में हमको मालूम है कि बेड रिडन को कोई भी वायरल डिजीज होके, सेकेंडरी इन्फेक्शन होके, वो बेड रिडन होने से ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। नहीं, और ये भी है तो डॉक्टर साहब, ये भी है, हम पूरे सीडीसी लेके, अमेरिकन सीडीसी, एफडीए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो या डब्ल्यूएचओ हो, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको डिमांड कर रहे हैं हम आज, रिक्वेस्ट नहीं, आपने ये डेथ्स को कैसे कोविड डेथ्स बताई, क्या पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बिना ये करे कैसा आप इसको निर्धारण किए कोविड डेथ? क्योंकि जब हॉस्पिटल जाते हैं, कोविड को दवा ही नहीं है, मैं बोलता हूँ आप रॉन्ग मेडिसिन दिए उसको, ज़्यादा मेडिसिन दिया और डेथ उसके वजह से, या दूसरे के चीज़, दूसरे रोग की वजह से ये लोग मर गए। अब मेरे को गलत साबित करना ना, ये लोग ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बताना, और क्या ड्रग्स दिए वहाँ पर हॉस्पिटल में, उसका ड्रग रिएक्शन भी बताना ना डॉक्टर साहब। तो एक तो सेकेंड वेव में इतना डरा दिया था कि काफी पैनिक हो गया था कि आर्टिफिशियल बेड शॉर्ट हो गए थे, जितने भी खाली आरटीपीसीआर पॉजिटिव को केस बता दिए थे, वो 80% बेड्स वर ऑक्युपाइड बाय माइल्ड केसेस, एसिम्प्टोमेटिक केसेस। तो उसमें जो जेन्युइन केस की बाकी कई बीमारियां होते हैं जिससे कि लोगों को एक्चुअल केयर की जरूरत है, जो कि नेग्लेक्ट हो गया था, उससे भी कई डेथ्स हो गए होंगे। और इंसिडेंटल अस्पताल में अगर सबको आप भेज दोगे तो हॉस्पिटल में भी वो इन्फेक्शन फैलेगा। तो ये जो तरीका था स्टार्टिंग से ही इनका गलत था कि सभी को टेस्ट करना, कंटैक्ट ट्रेसिंग, उससे भी केसेस इन्फ्लेट होना और हॉस्पिटल में क्राउडिंग हो जाना। तो और यही नहीं साहब, एक हमारे अक्षय बोल के एक व्यूअर बताते हैं, हर साल न्यूमोनिया से 1.5 लाख, 1,50,000 लोग मर जाते हैं, और ये सभी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना में डाल दिया। कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, और ये सरकार, केंद्र राष्ट्र सरकार किस तरह गुमराह कर रहे हैं, किस तरह माया कर रहे हैं, ये सब पूछ रहे हैं आपको। ये आरटीपीसीआर वो खुद बता रहे हैं ना, जो लंदन स्कूल वाले हैं, जो भाई आरटीपीसीआर से कॉमन कोल्ड को भी पकड़ेगा वो, और फ्लू को भी पकड़ेगा, और उसको कोविड में काउंट हुआ। तो ये सब गिनती एक ही तरफ किया, और इस बार फ्लू केसेस का गिनती नहीं हुआ है। आज के पेपर में भी आईसीएमआर ने बोला कि फ्लू कम हो गया इस साल। कम क्यों हो गया? वो तो सब आपने आरटीपीसीआर से लेबल कर दिया उसको। तो काफी कुछ इसमें मैंने बहुत डेटा क्लीनिंग की जरूरत है। माया, सब कुछ माया, सच नहीं है, खाली माया, दिखावट, डराने की एक बड़ी साजिश, और ये माया है।
और साथ में मीडिया भी मिल चुका है। बोलिए डॉक्टर साहब। अभी देखिए ये एक्चुअल डेटा है, दिस इज अ डेटा जो कि विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स ऑफ द पैंडेमिक ये हमको मालूम था। जॉन यूनिट्स है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उनका स्टडी है, मैंने लिंक दिया है कि 0 to 19 ईयर्स में 99.9973 सर्वाइवल है, मतलब 1 in million डेथ होता है। अप टू देखिए 60 to 69 ईयर्स में, 69 ईयर्स तक सर्वाइवल इज 99.41, और 70+ जो बेड रिडन है उसका भी 97 सर्वाइवल है परसेंट, और जो कि नर्सिंग होम में है, फ्रेल है, उसमें करीब 5% मोर्टेलिटी है। और इसी ऑथर ने दूसरा पेपर में बताया है कि जो एल्डरली फ्रेल बेड रिडन है उसको अगर कॉमन कोल्ड से भी इन्फेक्शन हो जाए, नॉर्मल सर्दी जुकाम से, तो उसमें भी उसका मोर्टेलिटी 8% होता है, और कोविड में 5% है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इट इज जस्ट लाइक अ फ्लू और अ कॉमन कोल्ड वायरस। पर्टिकुलरली जो एल्डरली है उनको थोड़ा केयरफुल रहना है, चलते फिरते रहना है, और जितना मोबिलिटी है उसमें से लंग फंक्शन अच्छा रहता है। अभी लॉकडाउन में तो और उनको भी ऑल वल्नरेबल बना दिया था, वो और बेड रिडन हो गए, और उनका इम्यूनिटी चला गया, लंग फंक्शन कम हो गया, मास्क पहन के और ये हो गया, घबरा गए। और तो अगर देखेंगे कोई इतने कम मोर्टेलिटी के डिजीज के लिए आज तक कोई इतना वैक्सीन रिसर्च नहीं किया और इतना मास वैक्सीनेशन नहीं किया। ये अभी हम दूसरे डिजीज भी देखेंगे जो इंडिया में है, उनके मोर्टेलिटी भी कंपेयर करेंगे, उसके लिए वैक्सीन भी है कुछ उन डिजीज में, पर ऐसा हमने इतना फास्ट कंपलसरी वैक्सीनेशन या मैंडेट या फर्स्ट बूस्टर डोज, सेकंड बूस्टर डोज कभी नहीं किया। तो दिस इज द एक्चुअल, देखिए इट इज द डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन लेवल। अभी हॉस्पिटल बेड तो हमेशा क्राउडेड रहते हैं इंडिया में, हमेशा हॉस्पिटल के बेड से, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इतना नेग्लेक्ट किया है। ऑलवेज आप कभी भी जाके उसका फोटो लेके आप पैनिक क्रिएट कर सकते हो। दीज आर द अदर डिजीजेस। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में डेली 400-500 बच्चे मर जाते हैं हमारे, यंग पीपल, यंग यूथ। डेली 500 पीपल डाई फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, डे इन एंड डे आउट, डेली। और हम कोई ऑटोमोबाइल तो नहीं बंद करते, लॉकडाउन तो नहीं करते ट्रैफिक का, अभी स्कूल तो नहीं बंद करते कि भाई बच्चे एक्सीडेंट से मर रहे हैं। फिर टाइफाइड से ट्रीटमेंट के बाद भी 1 to 4% मोर्टेलिटी है, और डायग्नोसिस नहीं होगा तो शायद 10% मोर्टेलिटी है। तो यहाँ पे कोविड में बिगर ट्रीटमेंट का मोर्टेलिटी 0.1 से नीचे है, और टाइफाइड का ट्रीटमेंट के बाद भी 3 to 4% मोर्टेलिटी है, क्योंकि ड्रग रजिस्ट्री से। टाइफाइड का वैक्सीन है, हम उसको तो कभी नहीं बोलते कि हर बच्चे को वैक्सीन लगा टाइफाइड का। टाइफाइड में भी हम ऐसा गिनती नहीं करते हैं, कंट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं करते हैं जैसे कोविड में किया। अगर करेंगे तो पता चलेगा 10 टाइम्स ज्यादा टाइफाइड से बच्चे मर रहे हैं, हमारे यंग पीपल मर रहे हैं। टाइफाइड हम नहीं। सिमिलरली जापानीज एंसेफेलाइटिस का मोर्टेलिटी है 10 to 50%, 30%, और सीएनएस अफेक्ट करता है, सर्वाइवर्स में भी पैरालिसिस रहता है, और ये हर साल होता है यूपी में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइस फील्ड्स में, और इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है। ऐसा हम पैनिक तो नहीं करते हैं। सिमिलरली स्क्रब टाइफस, ये भी ग्रासी एरियाज में रेंस के बाद होते हैं, इसका भी मोर्टेलिटी अगर डिटेक्ट नहीं करो तो 10%, 20% हो सकता है। डेंगू हर साल होता है हमारे यहाँ। डेंगू का मोर्टेलिटी हमारा हेमरेजिक फीवर का 10% तक जा सकता है अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया जाए तो। डेंगू हर साल होता है, बच्चों को होता है, डे टाइम में काटते हैं, उसमें भी मोर्टेलिटी के चांसेस रहते हैं, एटलीस्ट कोविड से ज्यादा रहते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस से तो डेली हमारे यहाँ 1400 लोग मरते हैं, यंग पीपल मरते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का भी वैक्सीन है, पर वो भी काम नहीं करता है। बीसीजी वैक्सीन है, वो कहते हैं कि इट कैन प्रिवेंट सीओली, एट बर्थ देते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं, क्योंकि इट इज नॉट फाउंड वेरी एफिकेस। उसका तो हम बूस्टर नहीं देते कि चलो 6 महीने बाद फिर दे दो, क्योंकि वो तो फिर चाइल्ड डेथ फ्रॉम अदर कॉजेस, ऑल कॉजेस चाइल्ड डेथ हमारे देश में 2000 के ऊपर बच्चे मरते हैं डेली, फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, फ्रॉम डायरिया, फ्रॉम अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्रॉम एक्सीडेंट्स। 2000 बच्चे मरते हैं। उसके लिए हम सोच रहे हैं क्या, गवर्नमेंट को अगर बच्चों का इतना ही फिक्र है तो 2000 बच्चे मरते हैं उसका हमको ब्रेक डाउन दीजिए। कोविड से 2 बच्चा भी डेली नहीं मरता है, यहाँ 2000 बच्चे मरते हैं, 1000 टाइम ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। कोविड से 2 बच्चा दिखा दे मरते हुए, वो डेटा मांगना चाहिए, गवर्नमेंट से डेटा मांगना चाहिए कि 2000 बच्चे मर रहे हैं डेली, ये डेटा तो गवर्नमेंट का ही साइट में है।
और अभी कहते हैं कि यूनिसेफ कहता है कि अभी पॉवर्टी हो गया, ये हो गया, मैल न्यूट्रिशन होगा बच्चों में, तो 4000 बच्चे मर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी 40% हमारे चिल्ड्रन आर मैल नरिश्ड, पुअर चिल्ड्रन, एंड कोई भी इन्फेक्शन से वो सकम कर जाते हैं। सो दीज आर रियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये माया नहीं है, ये रियल है। और जो कोविड का हमने डेटा दिखाया उसमें मोर्टेलिटी कुछ नहीं है, तो उसको पैंडेमिक बनाना एक माया है, डिसेप्शन है, एक इल्यूजन है, और एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम को हम देख नहीं रहे हैं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, इसको क्यों नहीं देख रहे हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये हमारे ही कंट्री में होता है और पावर प्ले चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये डिजीजेज नहीं होते हैं, तो वो अपना एजेंडा जो है उसी से वो, और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो खुद पैनिक कर गए, दूसरे को पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। हमारे को जो है, दीज आर द डे टू डे प्रॉब्लम। जो भी अच्छा प्रैक्टिस करता है, जो भी प्राइवेट डॉक्टर है, उसको मालूम होगा हमारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है। और अभी है अनदर माया वैक्सीन, और डेटा फ्रॉम 68 कंट्रीज, इसका भी रेफरेंस है, एंड 2947 अमेरिकन काउंटीज, काउंटीज मीन छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, वो डेटा, उसका पेपर मैंने दिया है, रेफरेंस नंबर 7। दे फाउंड नो कोरिलेशन बिटवीन द वैक्सीनेशन कवरेज एंड द इंसिडेंस एंड डेथ फ्रॉम कोविड। वैक्सीनेशन डू नॉट चेक ट्रांसमिशन, सपोज टू प्रिवेंट डेथ, दिस प्रोटेक्शन ऑल्सो वेन्स विद, वो कहते हैं कि डेथ एंड सिवियरिटी करता, पर अगर हम कंट्री लेवल डेटा हमने लास्ट टाइम बताए थे, अभी खाली 1-2 कंट्री का ही हम बताएंगे, आप लोग देख सकते हो इसको, दूसरे वर्ल्डोमीटर में जाइए, हर एक कंट्री का आप देखिएगा, जब से वैक्सीन रोल आउट हुआ उसके पहले का डेथ और अभी का डेथ। मास वैक्सीनेशन से म्यूटेशंस के भी चांसेस है स्प्रेड करने के, वो बड़े बड़े। साउथ कोरिया एंड इजराइल विथ हाई वैक्सीन कवरेज में अभी डेथ ज़्यादा हो रहे हैं। जापान में डेथ इंक्रीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जापान में पहले डेथ नहीं हो रहे थे। मैं हमेशा जापान का स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ, और सबको मैं एग्जांपल देता था जापान का, कि जापान में डेथ सबसे कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनका एज इज हाईएस्ट, देयर एज इज हायर देन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट उनका ओबेसिटी इज 1/3 द वेस्टर्न कंट्रीज, इट इज ओबेसिटी इज जस्ट लाइक द अदर एशियन कंट्री। तो जापान का रेट बहुत कम था, पर अगर आप देखेंगे आफ्टर द रोल ऑफ वैक्सीन उनका डेथ बढ़ गया। तो इसको दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन, क्या हो रहा है, इज इट ड्यू टू एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन से ज्यादा एनहांसमेंट हो जाता है डिजीज का, दैट इज दैट हैज टू इन्वेस्टिगेटेड, आई एम नॉट सेइंग, बट द डेटा इज, वो मतलब डेटा में कुछ तो बोल रहा है, वो सिग्नल दे रहा है, पर नोबडी इज वेरी लिस्टिंग वाचिंग द डेटा। ये देखिए, ये जापान का डेटा है। अभी आप देखिए बीच में जो रेड सर्कल है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जब किया था ये अप्रैल 2021 में किया था, और उसके अप्रैल 2021 में उनका एक पीक आया था, उनको आफ्टर द रोल आउट एक पीक हो गया, 2 पीक हो गया, अभी देखिए कुछ महीने हो गए तो अभी कितना ज्यादा जापान के डेथ्स हो रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुए थे। कितना राइट साइड में कितना पीक हो गया उनका आफ्टर द वैक्सीनेशन कवरेज, और जापान का वैक्सीनेशन कवरेज इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 80% जापान का वैक्सीनेशन कवरेज है, 80%, जबकि उन्होंने कोई मैंडेट नहीं लगाया। दे हैव बीन वेरी फ्रैंक टू द पीपल कि आप लेना है तो लो, तो ज्यादा लोगों ने ले लिया, और जब जहां दबाव ज्यादा होता है वहां लोगों को डाउट हो जाता है, ये भी एक फैक्टर है। पर अनफॉर्चुनेटली द वैक्सीन डज नॉट सीम टू बी वर्किंग इन जापान। अच्छा, जापान का हम इसलिए और एग्जांपल देते हैं कि जापान ने लॉकडाउन भी नहीं किया था। 2 कंट्री है लाइक स्वीडन, जापान एंड बेलारूस, 3 कंट्री है, 3 कंट्री ने कभी लॉकडाउन नहीं किया था, स्वीडन, बेलारूस एंड जापान। यूरोप में बेलारूस एंड स्वीडन ने नहीं किया था, और वो स्वीडन का भी अभी केसेस ज्यादा नहीं हो रहे, पर जापान का देखिएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि आपने लॉकडाउन कर लिया बोल के स्पाइक है, वैक्सीन से कोई रिलेटेड नहीं है। तो जापान ने देखिए, बाकी सब थिंग सिमिलर थे, ओनली द वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2021, एंड आफ्टर दैट देयर हैव बीन 3 वेव्स एंड द लास्ट वेव इज द हाईएस्ट। तो ये माया है, ये जो वैक्सीन इज नॉट पैनेसिया, जिसको कहते हैं कि मैजिक, जो माया ने बोला, जैसे वो मायावी कपड़े बनाते थे और बाद में वो गायब हो जाता था घटो, तो ये वैक्सीन बना के अभी गायब हो गए, फिर बोलते बूस्टर लो। दूसरा ये सिंगापुर का डेटा है, सिंगापुर का भी देखिए, पहले कुछ नहीं, सब बेसलाइन में थे, ये डेथ्स, हम सीधा डेथ्स बता रहे हैं।
क्योंकि ये कहते हैं ना वैक्सीन इज प्रिवेंटिंग डेथ नॉट ट्रांसमिशन, पर डेथ भी कहाँ प्रिवेंट कर रहा है? पॉपुलेशन लेवल देखिए आप, वैक्सीन इंट्रोडक्शन के बाद राइट साइड में ज्यादा पीक है, और जबकि अभी वाले वेरिएंट तो माइल्ड वेरिएंट कहते हैं ओमिक्रॉन वगैरह। तो ये क्यों हो रहा है? या तो वैक्सीन से म्यूटेशन हो रहा है, वी डोंट नो, दिस हैज टू बी। और सिंगापुर का भी 80% के ऊपर वैक्सीन से। तो ये हमने खाली 2 ही कंट्री के दिए हैं, आप लोग जाके वर्ल्डोमीटर में देख सकते हैं, साउथ कोरिया देख सकते हैं, आप देख सकते हैं श्रीलंका देख सकते हैं, मलेशिया देख सकते हैं, इंडोनेशिया देख सकते हैं, यूएसए यूके भी देख सकते हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन एंड बिफोर वैक्सीनेशन ट्रेंड्स में ज्यादा हो गया है आफ्टर वैक्सीनेशन। सो रियलिटी ऑफ, और दूसरा एक और क्या है, अब वैक्सीन में माया माया कर रहे हैं, पर एक्चुअल फैक्ट क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी का जो स्टडीज है, इसके भी रेफरेंसेस दिए हैं, इजराइल एंड अदर स्टडीज से 13 to 27 टाइम्स ज्यादा इम्यूनिटी होता है स्ट्रॉन्ग। उसको कोई बात नहीं करता ना, एक बार सीडीसी ने बोल दिया हाँ इट इज स्ट्रॉन्गर, उसके बाद उसको कोई पब्लिसिटी नहीं दिया जा सकता। खाली पब्लिसिटी क्या दे रहे हैं? वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। अरे नेचुरल इम्यूनिटी इसको हो गया, उसको 13 to 27 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, क्या मतलब हुआ कि उसको 2 डोज लेने के बाद अगर 13 टाइम्स है तो उसने 11 बूस्टर ले लिया, उसके बराबर हुआ ना वो नेचुरल 13 टाइम्स का मतलब। 27 टाइम्स कुछ स्टडीज में है, मतलब 2 बूस्टर तो 20 उसको लग गए, उसको क्यों एक्स्ट्रा वो वैक्सीन लेगा? वो पब्लिक मनी का वेस्ट नहीं है ये? वाई इंडिया हैज लो केसेज एंड डेथ्स प्रेजेंटली इज ड्यू टू वैक्सीन। क्योंकि दूसरे कंट्रीज में क्या है कि आपने वैक्सीन के बाद भी डेथ्स हो रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया बिफोर द वैक्सीनेशन रोल आउट मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन हैड रीच्ड द हर्ड इम्यूनिटी। बिफोर वैक्सीन रोल आउट इंडिकेटेड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 तो पहले ही हो गया था वैक्सीन रोल आउट के। और अभी जो सितंबर में सर्वे किया था, मैंने कहा कि 80% के ऊपर बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगा था उनको, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, एंड विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन द वैक्सीन। कांट वी वेट एंड वॉच? अगर इतना हमारा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, और पर्टिकुलरली हमको चिल्ड्रन में क्यों रोल आउट कर रहे हैं? बिकॉज चिल्ड्रन में डेथ ऐसे बिगर वैक्सीन के भी नहीं हो रहे थे, और अभी 80% के ऊपर चिल्ड्रन में सीरो सर्वे करो बच्चों में, साइंस से हिसाब से चलो। वैक्सीन में एक तो कॉस्ट लगेगा, सेकेंडली वैक्सीन के जो ट्रायल्स हुए हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रायल हुए हैं, बहुत ही लिमिटेड सैंपल में हुए हैं, और अगर 2 साल बाद 3 साल बाद इसका कोई साइड इफेक्ट है, अगर मास वैक्सीनेशन बच्चों में दे देंगे तो इरिवर्सिबल होगा ना, हु विल आंसर फॉर दैट? एंड आप कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं रख रहे हैं, बाद में आप उसको पिन पॉइंट भी नहीं कर पाओगे कंपेंसेशन के लिए। वो तो बोलोगे हाँ हो गया लॉन्ग कोविड शॉर्ट कोविड, अगर कोई कंट्रोल ग्रुप रखोगे तभी तो पता चलेगा कि जिसको वैक्सीन दिया उसको ज्यादा बेनिफिट हुआ या ज्यादा फायदा हुआ। दोनों चीज आप मिस कर जाओगे अगर आपका कंट्रोल ग्रुप नहीं रहेगा। तो ये तो अभी वेयर इज साइंस इन द पैंडेमिक? साइंस तो मिल ही नहीं रहा है। द होल डेटा ऑफ केसेस एंड डेथ्स वर बेस्ड ऑन क्वेश्चनेबल आरटीपीसीआर, उसका बुनियाद फाउंडेशन ही गलत था। बिटवीन द कॉमन कोल्ड कोविड एंड इन्फ्लुएंजा, डेथ्स विद कोविड 19 in people dying with other comorbidities counted as COVID deaths. The science of natural immunity ignored in vaccination policy. आज तक कभी भी हम पढ़ते थे जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया उसको वैक्सीन जरूरत नहीं है। जिसमें आप वैक्सीन दे रहे हैं वो भी एक वैक्सीन जो कि नया वैक्सीन है, जो कि अननोन वैक्सीन है, जो कि बहुत हेस्ट में डेवलप किया है, और यू आर गिविंग इतना मास रोल आउट कभी नहीं किया हमने वैक्सीन का, एंड फॉर अ डिजीज विच हैज गॉट सच 0.1% से नीचे मोर्टेलिटी है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नॉट नोन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी हमको डाउट होने लगा। अभी शॉर्ट टर्म भी बेनिफिट अभी डाउट हो रहा है फ्रॉम द पॉपुलेशन लेवल डेटा। वेयर इज द लॉजिक फॉर मास वैक्सीन इन चिल्ड्रन व्हेन मोर हैव एक्वायर्ड नेशनल इम्यूनिटी? Where is the third wave supposed to be a pediatric wave in children? Another Maya. Even after proof false, why people are going for child vaccination? लोगों को तो समझ आना चाहिए कि जब थर्ड वेव ही नहीं आया तो फिर ये क्यों हम वैक्सीन ले? पीडियाट्रिक वेव क्रिएट किया था उन्होंने। All failed in this Maya of the pandemic. कौन कौन लोग फेल हो गए? गवर्नमेंट शुड सर्व द गुड ऑफ द सिटीजन, गवर्नमेंट को आम जनता का वेलफेयर देखना चाहिए, उन्होंने फेल हो गए। वो वेलफेयर नहीं देखा, लॉकडाउन से नुकसान किया, सोशल डिस्टेंसिंग से नुकसान किया। अभी मास मैंडेट वैक्सीन, इनडायरेक्ट मैंडेट से आप लोकल ट्रेन में जाने नहीं दे रहे। मुंबई में कितने लोग का जॉब चला गया, कितने लोग को तकलीफ हो रहा है। तो गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन दिस माया ऑफ द पैंडेमिक।
ऑपोजिशन पार्टीज को वॉचडॉग होना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड। ऑपोजिशन को वो भी समझ में नहीं आया, वो भी माया में आ गया है। राहुल बाबा कहते हैं, राहुल गांधी इज आस्किंग फॉर बूस्टर। ये कहता है कि देखो प्रधानमंत्री मेरे कहने पर बूस्टर ने ऐलान किया। अब क्या बोलते हैं ऐसे दल को? आम आदमी पार्टी देखिए लाखों के साथ रैली करता है वो पंजाब और वहाँ चुनाव में, उत्तर प्रदेश में, रात में आके दिल्ली में नाइट कर्फ्यू ऐलान करता है। तो देखिए ऑपोजिशन भी माया में फंस गया है। ये पैंडेमिक का माया हो या उसका दूसरा माया हो, कि पावर का माया भी होता है, अटैचमेंट भी होता है और जादू भी होता है, या तो फिर डर भी होता है कि जो इतना पैनिक किया ऑपोजिशन भी सोच रहा है। देन प्रेस एंड मीडिया भी माया में पड़ गए। डॉक्टर एंड साइंटिस्ट जिनको वॉइस करना चाहिए वो भी ये माया में आ गए। ऑल अब फेल्ड इन द माया ऑफ द पैंडेमिक। क्या रीजन था? पॉलिटिक्स, पावर। माया मैंने कहा ना, एक तो मैजिक होता है, दूसरा माया लोभ होता है, अटैचमेंट होता है। तो पॉलिटिक्स में माया क्या है? पावर का। जर्नलिस्ट को क्या माया है? टीआरपी बढ़ेगा, उसका एक माया है, ग्रीड है, लोभ है। और खाली डॉक्टर रेड्डी जैसे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि ऐसे, जो कि ऑनेस्टी बहुत कम है। और फॉर प्रोमोटिंग द कैरियर, जो साइंटिस्ट है, कैरियर साइंटिस्ट है, प्रोमोटिंग द कैरियर, और करेज नहीं है, या समझ नहीं है, या डेटा को नहीं समझ पाते, या ब्लाइंड फेथ इन WHO, ब्लाइंड फेथ इन CDC, ब्लाइंड फेथ इन द गवर्नमेंट साइंटिस्ट विदाउट क्रिटिकल। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट में फेथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फेथ होना चाहिए गवर्नमेंट में, साइंटिस्ट को में फेथ होना चाहिए, गवर्नमेंट साइंटिस्ट में भी फेथ होना चाहिए, बट यू शुड सी द डेटा योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस। और अभी क्वेश्चनिंग करने से भी सेंसरशिप कर रहा है, ये कर रहा है। पर इन डेमोक्रेसी, जब तक हमारा डेमोक्रेसी है, वी शुड आस्क क्वेश्चंस। क्योंकि अभी तो बहुत सीरियस, अगर हम अभी नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सीरियस होने वाला है प्रॉब्लम। क्योंकि अभी WHO ने एक प्रपोजल किया है कि उनको अभी स्टैट्यूटरी पावर्स दिया जाए कि कोई भी पैंडेमिक है तो WHO गाइडलाइंस शुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो बिल्कुल ऑथोरिटेरियन हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं रहेगा, वो सबको कोई चॉइस ही नहीं रहेगा फिर आपको। तो ये हमको सतर्क होना है, अभी लोगों को समझना है, क्वेश्चन पूछना है। तो ये कुछ रेफरेंसेस है हमारे। रेफरेंसेस वाला कहाँ चला गया? आई थिंक ये कुछ इसमें रेफरेंसेस वाला आया। रेफरेंसेस वाला किधर गया? आपको मैं रेफरेंसेस भेज दूंगा डॉक्टर रेड्डी। या ऑलरेडी आप कहते हुए जब नहीं यहाँ पर क्या है, मैं आपको बाहर लाता हूँ। आज बताना चाहता हूँ यूट्यूब को और गूगल को। इफ़ यूट्यूब एंड गूगल, if they don't go for fair practices, they will be booked and they have to end up paying huge compensation, because our show is very clearly as per rule of law, constitution, invoking evidential act. We speak science and only truth, and the freedom is there with every citizen so that they can decide, no impositions. स्टार्टिंग में किस तरह हमारे चैनल को रोक दिया गया, इसीलिए आई हैड टू अगेन रिक्वेस्ट डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। नाउ रेफरेंसेस का भी मेरे ख्याल से वही कुछ होगा। हम थोड़ा मैं देखता हूँ, दूसरा इससे निकालता हूँ। इफ यू वांट, नो इश्यूज। यहाँ पर और एक जो है जाफर साहब बोल के, जो चाचा है वही भतीजा है। चाचा कोई है, कोई ही नहीं। मैकेंसी एंड गेट्स फाउंडेशन ओन PHFI, सेम शेयर होल्डर्स इन WHO। मैकेंसी और गेट्स फाउंडेशन जो है PHFI में, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, UPA स्टार्टेड दिस। हमारे मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, यही फाउंडेशन के द्वारा women from आदिवासी और गिरिजन communities, vaccine was, there was a trial in Andhra Pradesh under YS Rajshekar Reddy is no more, and Mr. Modi, who was the chief minister then, sponsored by this, and there was heavy indictment. And I don't know how these people, the same people, started Public Health Foundation of India under UPA. Now the same people are trying to dictate terms of our Indian health. अब यही लोग बड़े साजिश से हमारे स्वास्थ्य को अपने
गिरफ्त में रखना चाह रहे हैं और मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री है और उनकी बात सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं ये लोग, और यही लोग जो है पूरे मेजर शेयर होल्डर्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए जब आप देख चुके हैं, लोगों को हम जानकार करना चाहते हैं, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, आप हर जगह जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप काम करने के लिए जा रहे हैं, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं पर भी कोरोना का कुछ खुलासा हुआ है या क्या? बताइए आप खुद जानकार हो जाइए, क्योंकि ये इस तरह डरा डरा के धमका के आपको मार रहे हैं ये लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, they are trying to create fear and panic. You have been visiting theaters, cinemas, malls, you are going around in all public transport, children are going to schools, you are going for your employment. Is there any trace of corona? See, again WHO is trying to create panic as if this is the tip of iceberg. And see how Indian Council of Medical Research and even central government, Principal Secretary Mr. Balla, he says now there is no question of national disaster management rules application, but at the same time again he is asking for masks and physical distances on the advice of family and health. Where is family and health welfare department? Where is science? Where is truth? You are trying to curb the freedom. And how you have seen Bill Gates and McKinsey were part of the same conspiracy when vaccines were tested in Gujarat under Mr. Narendra Modi, when he was Chief Minister under Y.S. Rajshekar Reddy, when he was the AP Chief Minister on Adivasi and Girijan women. And what happened to that case? I am demanding, because now under the same UPA, this Public Health Foundation of India, funded by McKinsey and Bill and Gates Foundation, opened up this so that our entire health is in their hands. Health is wealth. Now the same people are trying to dictate terms in India under the aegis of our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi's government and all political parties. That is why whether it is Congress, UPA or NDA, they are all one. Because PHFI started under UPA, and both when Modi was there as a Chief Minister, Mr. Narendra Modi, they were experimenting vaccines. Untested, under trial vaccines. The same governance now it is there, and these people are dictating terms because they are the major stakeholders in these World Health Organization dictates. And there was another one, they said because of malnutrition many children die in India and developed countries. Is it not true? Can you relate it? That's what they were questioning Chief Justice of Supreme Court and Indian Council of Medical Research, including Prime Minister and Chief Ministers. Is it not true? How many children died because of COVID? Give us the details that they are questioning. Another one, yeah. Yes, sir. I am currently studying at Dr. D.Y. Patil University, Pimpri. How can I meet Dr. AMITAV BANERJEE there? No, Mr. Akshay, first you have to come to Dr. TSPR channel. You have to support Dr. TSPR channel. First you subscribe Dr. TSPR channels. Then you support Dr. TSPR channels. Then you will get the interview from Dr. AMITAV BANERJEE. You can always meet him. I will leave it, sir. I will be there tomorrow. You can meet me in my department of community medicine. Mr. Akshay, you can meet Dr. AMITAV BANERJEE tomorrow in Public Health Department. Tomorrow he is there. And he says the rank of India media is 142 in the world. So you can imagine how much fake news they are spreading. So at least now as a journalist, I feel sad. I've been as a doctor into journalism. Why our journalists and media channels trying to create this fear psychosis? One liner in every channel, they are copying the same. Who is funding you? See, your own family tomorrow will be a victim of these. Try to understand. My request to all media, why are you creating this fear psychosis? Lakhs of people participated in the rallies, elections. Did anything happen to anyone? Come on, media. And all the farmers were agitating during your first and second phase. When entire India was, you said they were dying. Show me how much there was a spread of COVID or how many people died because of COVID-19. Even Supreme Court also we are challenging. You are sitting on the trial of the case, allowed first dose of vaccine, second dose of vaccine, then booster, then Enthagi, Dr. Arora, when he is trying to fool the entire world, why Supreme Court kept quiet? Even Prime Minister's office, I am surprised. He said many children died during the second wave. And how are you describing this as first and second wave? First wave only elders, second wave children. Is this not a big fake? It Maya? Why Supreme Court is silent? And no parliamentarian, no MLA discusses either in the assembly or parliament. Is this not a Maya in a democracy?
So that is why media is rated 142. He says, more fake news. Why are we doing all this? Yes, Doctor Sir. Media, though, I think global media is controlled. You see, 50% says 50% contribution is by Gates Foundation to WHO. WHO is also cash staff, and WHO is controlled by Gates Foundation, and Gates Foundation has donated a lot of funds to all the media houses. All the big media houses are controlled, are given the funding from Gates Foundation. It is in their public domain. There should be a serious So inquiry against Public Health Foundation of India, sponsored by McKinsey and Bill and Bill Gates Foundation, and who are again have major stakes in World Health Organization. Are these not people responsible for spreading false things against science, and which is not at all truth? That is why we said this show is titled as Maya. And why Supreme Court is, I am really surprised. Supreme Court and High Court still they are playing with the lives of people with masks and physical distances. And why there is no accountability for vaccines? Under trial, untested. If vaccines were correct, why then waves? And if waves are there, if strains are there, how can the same vaccine can work? Is this science? यही माया है. Yes, sir. They are experimental vaccine, and all experiment, even a small experiment, you are supposed to have a control group. So why you are not having a control group? And then only we can know whether the vaccine is working or the vaccine is having any adverse events. So that is very difficult. You are eliminating the evidence. You are tampering with evidence. You are just playing by the fear of the people, by sustaining the panic, and so that you are making people desperate for vaccine. It should be a informed consent for vaccine also, and should be by weighing the risk benefit. Without the data in the public domain, you cannot calculate risk benefit. Nobody can calculate risk benefit, and as you go towards the younger age group, the risk benefit does not work out. The harm outweighs the risk. As I said, even one child death is one too many, because that particular child would not have died of COVID, but due to sometimes unforeseen reaction to any drug. Any drug can be harmful to anyone. So that is very unfortunate if you do not do the, as I said, a disease which has got 5-10% mortality, which we have got in India. We have got dengue, we have got typhoid, which have got a higher mortality. For that, vaccine is also available for typhoid. We don't have vaccine from dengue, but vaccine is there for typhoid. But we are not going so much for vaccinate typhoid. As I said, because it's not a priority in the Western countries. So yes, it is not a priority in the Western countries. There is absolute Maya, and around the world, some Maya. I am trying to expose it for you now, before we say bye. And Mr. Akshay, you can meet Dr. AMITAV Banerjee tomorrow in his department. But before doing so, subscribe this Dr. TSPR channel, Citizens Dr. TSPR channel, Environment People Dr. TSPR channel. We have 3 channels, DR TSPR. So you subscribe, share it amongst all of your groups, and like you as you have participated, I welcome you to participate regularly, because your views matter. We are not here to impose. So now we are going to decode Maya around the world with just few. Yes, Doctor Sahab, kuch कहना चाह रहे हैं? Yeah, you can introduce my book also. I have written, if they want, they can just COVID-19 Pandemic, A Third Eye, AMITAV Banerjee. It is available on Amazon, Flipkart. Yes, बोलिए, क्योंकि अब देखिए, आप जब से आपका शो ऐलान करता हूँ मेरे व्हाट्सएप के साथ माया, आज स्टार्टिंग यू हैव सीन how they try to obstruct the live show. That is a big Maya. I am doing it on another one because my WhatsApp is hacked. Dr. Banerjee's written book, title क्या बताइए सब? It is there in Amazon. COVID, it is Amazon, Flipkart. It is COVID-19 Pandemic, A Third Eye. AMITAV Banerjee, you search on Amazon, you will get it. 200 rupees. Buy it. Buy it. Third Eye show का
तीसरा अंक ने खुला है। जब से ये लोग आ रहे हैं, अमिताभ बनर्जी साहब और उनके साथी, हम खाली विज्ञान सच्चाई को बता रहे हैं ताकि आपका हक आपके हाथ में हो। सो आप जानकार हो जाइए, क्योंकि वैक्सीन्स में गाय का बछड़े का खून है, कोवैक्सीन में, कोविशील्ड में चिंपांजी सेल्स है, बाकी वैक्सीन्स में जो बच्चा फीटस में जो मर जाता है उसकी सेल्स है। ये क्या सही है या नहीं, प्रधानमंत्री जी बताना चाहिए आप। हम गांव की रक्षा की बात करते हैं, और ऐसे कोरोना जो महामारी को, जहां पर 99.99% बिना चिकित्सा के वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो दुनियादारी में व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, माया, वी आर रिवीलिंग दिस माया फॉर यू बिफोर वी से बाय। And so spike protein is a very, very important protein. I think with all the conspiracy theories going on around the world, I think we need to understand that we are dealing with something very toxic. Nature could never conspire to put together such an array of pathogenic proteins into a single protein and stick it onto the spike of a virus and make it infect human beings. So I'm of the opinion that this is an engineered protein, a lab engineered protein. That's the only thing that makes sense, because I can't see how mutation over centuries would have produced this and it would have gone unnoticed and suddenly appeared with no ancestry to it. We would have plotted a course along a timeline. So spike protein is definitely engineered. That throws a lot of light into what is actually happening around us. If this is a toxin, then it's one of the most elaborate, well-engineered, well-thought-of toxins ever produced by man. Well thought about toxin ever produced by man. Is this not a Maya? Ancestry, there is no ancestry to this toxin called spike protein. Yeah, डॉक्टर साहब, तो हम दुनियादारी की माया दिखा रहे हैं। He is Dr. Sankara Sethi, South Yes. Africa, Yes. and he himself has treated more than 6,000 patients of COVID-19 with ivermectin. So he has done a lot of work on ivermectin without a single death. Yeah, that is why I am trying to put it across the world, challenging CDC, FDA. You are keeping silent even after Pfizer revealed thousands of deaths with the vaccine. Initial stages, you kept it under wraps, and you went on vaccinated America and Europe. Everywhere Pfizer was used, like Moderna. How dangerous they were, including Johnson vaccine. The papers are there out. Court ordered papers, only then the truth is coming out. Why Americans are keeping quiet? Big convoy rally, freedom convoy rallies in Canada. How Justin Trudeau again trying to divert in the name of Ukraine. America, see, they are keeping quiet. Even Senate passed some things wherein the mandates were removed. Nothing comes out. That is Maya. So spike protein, big Maya, challenging World Health Organization, including China, which they are trying to play again dirty games there. Then comes another one. See, we are trying to deflate all these Mayas. In the document we just posted, the earliest piece of evidence we posted is from October of was it 2020? Yeah, and that is an FDA document from the Vaccine Related Biological Advisory Committee, VRBPAC, and that document shows that going way back to October of 2020, they expected a number of very serious side effects from these vaccines, up to and including death. Well, it specifically states that that's what they were looking for and that's what they were expecting. Interestingly enough, when the jabs were released, none of those were listed on the side effect sheets. So no one was given informed consent. No one was told this could kill you, this could cause long-term issues, it could cause long-term problems. No one was given that information. So millions of people went out and took this jab without informed consent. Now, under the law,
the Secretary of the Department of Health and Human Services is required, if they're going to authorize something under emergency use, to ensure that people are reasonably apprised or going to be reasonably apprised of the risks and the benefits. They specifically avoided doing that. They specifically and knowingly refused to do that. So this is a real crisis. And one of the things that I think underlies this, and going to be a consistent theme as we talk about this, is the fact that, you know, we see some of the Republicans and some of the people who are new to this saying, well, it should be everybody's choice. No. See, we don't have another product. There is not a single other product available on the market anywhere. Drug, chainsaws, hand grenades, not one, that causes as much death and carnage to consumers. We don't have one product that is more dangerous than this vaccine on the market. And yet we can't sue the manufacturers if this vaccine hurts us. So there's no transparency, there's no informed consent, and there's no accountability if you get injured by this product. So you cannot say that it should be everybody's choice. You can't make a choice without informed consent. And if there's no redress for an injury after you do this, then it's just not a fair playing field. So we can't have that. The idea that these have to be pulled from the market entirely. Very clearly informed consent, and you should have transparency and accountability. And these vaccines are more dangerous than the hand grenade or ammunition. This is what is all science. Now everything is coming out, and this is Maya, big Maya. Here also, why Supreme Court, High Court are keeping quiet. And you have seen after Modi became the Prime Minister, how all of a sudden the political parties funding, NRI funding becomes opaque. Right from 1974 till this date, you cannot question them. They will not give you any information. Even electoral bonds are opaque. I am demanding, I am challenging them. Is it because you are funded by these pharmacies and insurance companies who are becoming more and more unscientific? And are you taking the same money? Now, we will show you this. Remember, the end game was a herd immunity. That was the end game, right? That is the reason why we're vaccinating, unless my understanding is wrong. But what we are seeing right now is an increasing number of vaccinated people who are shedding virus, highly infectious strains. So this is exactly the opposite of herd immunity. Herd immunity is you vaccinate people or you immunize people and you diminish shedding to an extent that the likelihood that somebody who's not immunized gets in contact with the virus is remote. That is herd immunity. We are turning vaccinees, vaccine recipients, into asymptomatic spreaders. And that is exactly the opposite one. So where is this going to end? When is what is the perspective? Herd immunity? I mean, people may think my theory or my ideas or my scientific concepts are controversial, but there is one consensus. Everybody agrees that the vaccines will not be able to generate herd immunity. That is very, very clear. And that was the target of the vaccine. It is very clear how vaccines are not going to generate herd immunity. It is the natural immunity through infections only. That natural immunity is robust, and even they have challenged because of side effects of Pfizer in the very beginning. There was 3% mortality rate. I am not stating this. After court order, the papers were out. Whereas the people dying because of corona are only 0.026%. But through vaccination side effects, 3% only on the available paper. It can be more or less because much and more data has to come up. Whether it is Johnson, other vaccines, Covaxin, Covishield, everything. If you pull in all the data, because of corona, if they are dying because of 99.99% recovery and only 0.26%, because of Pfizer, the papers out, the death rate is more than 3%. That's what they are claiming. And herd immunity is not being happening with vaccines. It's a big statement coming out. Now, I am stating, now who are benefiting? Why are these being imposed on us? That is a $1 million question which arises. So for that, I have another video. Let me show you.
just wanted to show you another video. Who are benefiting? Who have become richer because of Corona mandate? After Corona mandate, are these the ones who are trying to drive during Corona period? Everyone, including journalists like me, we have become economically weak. And is it not manufacturers of vaccines, masks, syringes, disposable gloves and all created fear psychosis? Now we have seen everything is being, and sanitizer makers. And is this not Bill and Bill Gates Foundation, McKinsey, all those sponsoring WHO, who have become wealthier alongside all these online geo laptop manufacturers, cable, phone? Are these not people who have become richer? Now you let us listen to him. We closed down 1 million businesses. 60% of black-owned business, many with 3 generations of investment, will never reopen. And we turned that business over to Amazon and Facebook. The people who were censoring us, who were censoring any criticism of these government countermeasures, they were the ones who were the primary beneficiary. We created 500 new billionaires with the lockdowns. We had the biggest shift in wealth in human history. $3.8 trillion from poor and working people to the very rich. And the people who were censoring us were the people who were inheriting all that wealth. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Ellison, Mike Bloomberg, and all the other ones. And so you had this conglomeration of pharmaceutical officials, of these internet titans who promised us that the very internet they were creating for us were going to democratize the planet. And it's now turned out to be the primary weapon and instrument of totalitarian control. They lied, and they made themselves rich doing it. It's a big Maya which is released. 500 billionaires, more than 500 billionaires, $3 trillion money touring this. Is this not a big Maya? And they were censoring, creating fear psychosis amongst us, and they were becoming millionaires and billionaires, funding all politicians, political parties across the globe, so that they have all become one. They have made rich money. कितने लोग बिलियनर्स बन गए? $3 ट्रिलियन की संपदा किसके पास है? ये माया नहीं है क्या? हमको डरा के, धमका के और सेंसर करके ये लोग इतना बड़ा पैमाने पर कमाए और इतने बिलियनर्स बन गए, 500 के ज़्यादा बिलियनर्स, और ये सभी लोग राजनीतिक दलों को फंड देते हैं। इसीलिए ये लोग भी उनके साथ में रह के हमारे ऊपर इस तरह की माया जो है सच नहीं है, केवल डरावा है, दिखावा है। क्या ये हमारे ऊपर नहीं ठोका गया? ये हम आधार के साथ आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। आप जान जाइए, जानकार बन जाइए, ताकि जब आप विज्ञान और वैज्ञान साथ में सच्चाई क्या है आप जानकार बन जाएंगे। आप आपके हक जता के आप प्रश्न करना सीखेंगे। तो हम यही चाहते कि आप प्रश्न करना सीखिए, क्योंकि आप खुद संविधान हैं और हमारे जो टैक्सेस से ये केंद्र से राष्ट्र सरकार चलता है। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू ऑल लॉजिकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन विच इज़ ट्रूथफुल, so that you have freedom to decide what you want. Right to life, right to health is your fundamental right. We are here to provide you such wonderful data with wonderful people like Dr. AMITAV BANERJEE. And we have seen world over how Maya, how they have become rich over 2 years. And that money is being spent censoring us, creating fear through these political parties, Indian Council of Medical Research, World Health Organization, as being touted by the famous advocacy of America. Yes, sir. One passing comment before we say bye. I always keep saying that the antidote to this is TEAT, transparency, which is lacking.
ट्रांसपेरेंसी माया जाल, जिसको कहते हैं जाल से कुछ नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंसी को हमको वापस लाना है, पूछना है ट्रांसपेरेंसी। उससे क्या होगा? एम्पावरमेंट होगा। ई एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, दे विल बी पावर। अभी पीपल का पावर छीन लिया है। एंड अकाउंटेबिलिटी, जो लोग ने ये जितने किए जिससे नुकसान हुए हैं उनको अकाउंटेबल, जब पीपल एम्पावर होंगे तभी पीपल उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे, तभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होंगे, तभी उनके अगेंस्ट एफआईआर होंगे कि इतने नेग्लिजेंस से, इतने गलत पॉलिसी से इतना नुकसान हुआ, कुछ डेथ्स भी हो गए, वैक्सीन रिलेटेड डेथ्स भी हो गए। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हमको लड़ना है, एम्पावरमेंट के लिए हमको जागृत होना है, और अकाउंटेबिलिटी, TEA। तो TEA चाय के लिए लड़िए, क्योंकि चाय को बेच के हमारे प्रधानमंत्री आज, देश के प्रधानमंत्री चाय बेच के ही, वो भी स्टेशन में चाय बेचने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इसीलिए वो अंग्रेजी का मतलब टी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हम कहते हैं कि कहाँ है। और साथ में जब आपको सही जानकारी जब मिल जाती तो आप शक्तिमान हो जाएंगे। ये मतलब है कि एम्पावर्ड हो जाएंगे आप सोचने वाले नागरिक बन जाएंगे। जैसे ही आप सोचने वाले नागरिक बन जाओगे, आप अकाउंटेबिलिटी जो कहते हैं हम, जिसको जिम्मेदार कहना अपने आप आ जाएगी। ICMR जिम्मेदार है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री ऑफिस से लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस जिम्मेदार है, राजनीतिक दल जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ये माया महामारी के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस माया पैंडेमिक? Once you get truly informed, well informed, right from PMO's office to CMO's, all political parties or Indian Council of Medical Research, DCGI, who is responsible for this pandemic Maya? It will only be done through T, transparency. Through transparency, once you get good information, truthful information, rightful information, which you have to cross-check again. Cross-check it. That is why we give you references. Wonderful guests like Dr. AMITAV BANERJEE, Dr. Kushwahu and Dr. Das, so many people, they come on the channel, they provide you all evidences, references, so that you can cross-check them. So once you become clear, yes, sahi hai, ye sach hai, then you become powerful. You are empowered with truth. You are empowered with science. Then you will demand for accountability as to how you have taken away 2 years of our precious lives. So many innocents died. Children lost education. We lost employment. And again, you have misutilized our money for a disease which has got 99.9% cure in the name of vaccines, mandates. Again, you made those billionaires to become more and more rich. Vaccine manufacturers, Bill Gates, McKinsey, or our Ambanis, why they have become rich when everyone is suffering. Dal, chawal, 90 rupees liter packet oil, it is costing 210 rupees. Likewise dal, likewise rice, staple food has become very costlier and dearer. But on the other side, the richest have become more richer. अमीर जो है और अमीर बन चुके हैं, लेकिन जो नीचे हिस्से में है, हम जैसे सभी लोग और पाताल में गए और इतनी कीमती हो गई। तो इसके बजाय ये माया है या नहीं महामारी का, आप ही सोचिए, जानकार बन जाइए। थैंक यू वेरी मच सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Dr. Reddy. Thank you, everyone. Yeah. Subscribe Dr. TSPR channel, Citizens Dr. TSPR channels, and Environment People Dr. TSPR channel. The same show will be retelecasted coming Sunday at 11 a.m. on Citizens Dr. TSPR channel. In the beginning, we had to repeat because there was a hacking thing which went on. That ghost, I don't know who is, again he has removed. And I only hope you people will help us, support us. That is why we have been requesting. We are doing in larger public interest. This show tagline is clear: no enmity against individual, nor animosity against any party or organizations. Issue as per rule of law, constitution, invoking evidential act, and such wonderful guests. See, they are coming with PowerPoint presentation, with references. Show me which channel does all this. Why are we doing this? Because we have nothing against anyone, except larger public interest for societal good. Come whatever may, we will not deviate from this path. All these threats, we are ready to face for the sake of public interest. Thank you, sir. Take care. For all the Indians, Sukhanidra Shubharatri for the world over. Good morning, good afternoon, and good evening. I hope through Dr. AMITAV BANERJEE, the modern Ghalib, once again
what is real, what is Maya. It has been very clearly enshrined in this show through his experienced presentation once again. And do follow his book on Amazon, The Third Eye, Dr. Amitav Banerjee, and you can buy investing rupees 200 rupees. But believe me, it is worth the book because it has all public health principles. क्योंकि हम साइंस से ज़्यादा दूर गए, ट्रूथ से चले गए, इसीलिए आप जानकारी लेने के लिए ऐसे बुक पढ़िए, आप पढ़ना सीखिए. थर्ड आई डॉक्टर अमिताभ बनर्जी का बुक अमेजोन में है, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप. टेक केयर सर, बाय. Okay.